Hello friends, very good morning all of you. तो आज क्लास टी कौन रहो पेडागोगी जो कहते हैं ना तो ता ऊपर रहो कंप्लीट पिला माने बहुत कितने छोटे क्लास टी रहो ओके तो जो माने ओटीटी सीटीटी अथवा जूनियर टीचर अथवा एलटीआर पे प्रिपेयर होउछंती से मन उसमें पेडागोगी रो प्रीवियस क्वेश्चंस व मान तो प्लीज समस्त अनुरोध प्लीज जॉइन करो जो माने इच्छुक अछ ओके एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो पिला माने फ्रेंड्स मानू सो दैट को अधिक पिला एडी जॉइन कर पारंती तांकर उन्नति हे पारे ओके देखो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स आई विल जस्ट शेयर दिस वीडियो ओके ता आगुर समस्त अनुरोध मोर गोटे क्लास होची पॉलिटी क्लास आरंभ होची बहुत जल्दी तो जो मान पॉलिटी रे तकलीफ होची पॉलिटी रे बुझिबार असुविधा होची से जमान पय गोटे पेड क्लास आना जाउची बहुत जल्दी आना जिवो प्राइस 50% ऑफ रही आना जिवो ओके तो जो मान इच्छुक से जॉइन करिवो आर डिस्क्रिप्शन पर भलो जिंस सब देखे प्रति एग्जाम ओरिएंटेड मु शेयर आपन मानु देखे दी ओके डोंट वरी अबाउट इट ओके ना हमर जो फ्री रे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करो जोटा कि तुमको फ्री रे जहां भी पीडीएफ क्लास होची सेगुड़ा को हम तुम जार प्राइज यूट्यूब चैनल को हम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट कि अधिक पिला हमर एंगेज रहिबे आपन मानु भी हेल्पफुल हो हम पे भी हेल्पफुल हो ओके just give me a few seconds only okay I'll just share this video अच्छा अच्छा एटा कोन प्रीवियस क्वेश्चन ता मे भी टिके जदी विजुअल होथियो न होथियो मत कहो मोर पीडीएफ डी पठे दिबे ऑलरेडी ओके तो समस्त देखि रखि तो क्वेश्चन ता कोन होचे ओके ठीक है जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स मोर visual होची I think it is visible okay the study of variation in physiological characteristics of individuals is known as the study of what okay learning and teaching behavioral disorder and social discrimination देखिए individual differences ओ कौन रहइबो ना पिला एटा प्रीवियस क्वेश्चन एटा एलटीआर राष्ट्रीय क्वेश्चन गुडा सर एलटीआर ओके एबे बहुत ये 2024 रो क्वेश्चन हला एलटीआर रो क्वेश्चन पिला माने एटा ओके एलटीआर रो क्वेश्चन दा आउ एलटीआर रे पेडागोगी रो क्वेश्चन हला बहुत कम क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस रहइबो आरो है ना कोन रहइबार राइट आंसर जदी आ भीतर किए कहि बार राइट आंसर ओके देखो ऑप्शन रहइबो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहइबो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज रहइबो हला कोन रहइबो द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओके जदी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखे प्रत्येक इंडिविजुअल रो सेटा को कोन कहबे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहबा हला कोन कहबा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ओके देखो नेक्स्ट जीवा the knowledge of individual differences among students can help teacher okay कौन रहइबो पिला माने राइट देखो देखो the knowledge of individual differences among students है ना the individual student माने जो difference is knowledge of a student तो how can help a teacher है ना टीचर को हेल्प करता maintaining proper class discipline studying necessary literature है ना you know devising suitable teaching strategies and देखिवा effective classroom management ऑप्शन कौन रहइबो भीतर है ना the knowledge of individual differences among students है ना and can help teachers कौन help कर पारे टीचर को गोटे प्रत्येक स्टूडेंट निज निज इंडिविजुअल नॉलेज प्रति टीचर को कौन हेल्प कर पारे ओके ऑप्शन रहइबो से ना आप कौन करे पारो हेल्प कर पारो हेल्प ए टीचर इन डिवाइसिंग सुइटेबल टीचिंग स्ट्रेटजीज ओके टीचर पर गोटे स्ट्रेटजी भलो बनाई पारे से जगह ओके हला नै जिबा Roger defined a process of learning as change from okay Rogers define the process of learning as changes from ignorance to knowledge real life to ideal life concrete to abstract understanding known to unknown concepts okay it option B रहिबो पिला real life to ideal life okay कौन real life to ideal कौन Roger defines कौन process of learning is a change of real life to ideal life okay Roger कौन कहछन सीधा करे process of learning is change to real life to ideal life okay देखो as a result of feedback based on a formative assessment learners modify their existing knowledge in this case it is assessment learning assessment with learning assessment for learning assessment as learning अच्छा ई जगह सु चेंज पिला माने देखो कोन रहिबार टिके बुझो कोन हो यार उत्तर डी कोन रहिबो राइट आंसर एज ए रिजल्ट ऑफ फीडबैक बेस्ड एंड फॉर्मेटिव
assessment. Okay, learners modify their existing knowledge. In this case of है ना ऑप्शन डी ରହିବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर ऑप्शन डी ରହିବ assessment as learning. Okay, assessment as learning ରହିବ ହେଲା assessment as learning ऑप्शन डी नेक्स्ट ଯିବା the degree to which a learner is prepared to receive formal instruction in technically known as okay जो देखिवा the degree to which a learner is prepared to receive formal instructions बुझल ना degree which learners prepared to receive formal instruction in technically कौन କୁହାଯାଏ ସେଟାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବିଲିଟି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଡନେସ୍ ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ कैपेसिटीज एंड लर्निंग है ना एगरनेस कौन ରହିବ अच्छा लर्निंग रीडनेसेस ରହିବ राइट आंसर लर्निंग रीडनेसेस ऑप्शन बी ରହିବ राइट आंसर ओके और ऑप्शन बी ରହିବ ପିଲାମାନେ राइट आंसर ओके ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟस क्वेश्चन ରେ ଯେହେତୁ ଆଣିଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖା ଯାଇ ପାରେ ହେଲା ऑप्शन गुडा को अलग अलग पेज थे सेटा भी देखा जाए है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट आइटम बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन सेपरेट गुड लर्नर्स फ्रॉम पुअर वन इज टेक्निकली टर्म एज डिफिकल्ट वैल्यू ऑफ आइटम्स discriminating power of items and validity of the items and the reliability of the items कौन रही पारे पिला माने राइट आंसर यार देखो राइट आंसर ऑप्शन बी रहिबो पिला डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द आइटम्स है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द आइटम इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट बा व्हिच ऑफ द अच्छा अनेक असुविधा कहां कोन असुविधा है कमेंट बॉक्स लिखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन least important for a teacher while providing her individual differences in the classroom okay which of the following is a least important for a teacher ना बहुत कम इम्पोर्टेंट रहता है टीचर पे while providing individual differences समस्त इंडिविजुअल डिफरेंस देला समस्त क्लासरूम रे है ना और वो द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कौन ही पारे टीचर पे इम्पोर्टेंट रही पारे ओके ना diverse background of learners height and weight of learners and learning style of learners and the level of motivation of learners कौन रहेगा पिलामान देखो एटा कौन रहेगा heights and weights of learners है ओके नेक्स्ट जीवा which of the following educational theorists gave a strong socio-cultural theory of a cognitive development social constructivism 8 number question which of the following educational theorists give a socio-cultural theory of a cognitive development okay कौन है वो जीन पेगाट जेएस बॉर्नर लीव भाइगोस्का एंड जॉन डेवे ओके ये थ्योरी ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲା सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ओके ऑप्शन के ଦେଇଥିଲେ ऑप्शन सी ରହିବ ହେଲା ऑप्शन सी ହେଲା लेव ना भाइगोस्के ओके ऑप्शन सी नो नंबर दो द मोस्ट यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएमएल अच्छा teaching learning material जो TML software to be used by the teacher is the one which attracts attention of learners to a teacher is attractive and beautiful look at and involves several sense organs in learning and helps maintain better classroom discipline most useful teaching learning material okay to be used by a teacher कोड़ा भलो मटेरियल इधर यूज करा जाय परियो टीचर को द्वारा ना या भितर ना it involves several sense organs of learning okay option C नै जीवा the main purpose of The main purpose of assessment in constructive learning approach is to the main purpose of assessment in constructive learning approach is to develop habit of reading and writing, known how children learn and what they learn,
ensure classroom discipline, encourage learners to respect teachers' view. अच्छा आर रहिबो हाँ how know how children learn and what they learn. Okay, option B ରହିବ ହେଲା. Option B ରହିବ. Okay, 10 number. What is the main purpose of assessment in constructive learning? है ना constructive ମାନେ ଗୋଟେ plan way ରେ ହେଲା constructive ଗୋଟେ plan way ରେ learning approach କୁ ବୁଝାଏ. Okay, ହେଲା option B ରହିବ ହେଲା କଣ ଲେଖା ଅଛି know how children learn and what they learn ହେଲା. The major element of humanistic theory of learning given by Carl Roger is the concept. अच्छा कार्ल रोजर ये जो मैंने जो theory दौरान एमान विषय भी टिके समझते टिके observe को रखी दिया दरकार. Okay, the major elements of humanistic theory of learning given by Carl Roger in the concept of immense capacity of man, fully functioning individual, trial and error in learning, importance of है ना perception. आर बी रहिबो राइट आंसर पिला कोन फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल. ओके फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल ऑफ राइट आंसर. ओके ऑप्शन बी नेक्स्ट जीवा. अच्छा आर पीडीएफ टी हम कोडी पाइ जिवा कहले पीडीएफ टी हम पाइ जिवा हमर टेलीग्राम ग्रुप रे. ओके पीडीएफ टी हम टेलीग्राम ग्रुप रे पाइ जिवा. ओके which of the following term is most closely associated with the constructivist pedagogy to of learning. Okay, of learning, sorry two कह देली constructive pedagogy of learning. Okay, which of the following term is most closely associated with the constructive pedagogy of learning? Okay, no description, explanation, experimentation and देखिए indocrination. Okay, no indocrination. Okay, आर रहिबो ऑप्शन सी रहिबो पिला ना experimentation. Which the following treatment term is most closely associated with the constructive pedagogy? Let's see experiment. Okay, experiment option C रहिबो right answer. Okay, हला informative assessment system feedback provided by the teacher to learners act as punishment, reinforcement, reward and prompt. आर पिला reinforcement है कौन द formative assessment system feedback provided by teacher to learners act as a reinforcement. Okay, next ba the step the first step in the process of test construction is na the first step in the process of test construction is identification of content domain, development of test blueprints, formulation of objective of testing, and collection of construction of test items. देखो फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. ओके फास्ट प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो देखिबा कोन रहबेडा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज राइट आंसर. कोन पाइबा एडा formulation of objectives of testing. Okay, option C. Which of the following type of test items are most appropriate for assigning higher order thinking abilities? Okay, कौन रहेगा पिला माने राइट आंसर जल्दी के देखो ट्रू फॉल्स टाइप, मैचिंग टाइप्स, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप. अच्छा देखो मतलब assigning assessing the higher order thinking ability. Okay, जल्दी कौन लिखो कार higher able कौन लिखे क्वेश्चन ना बुझी पड़ता है बोलते for assigning higher order thinking abilities. Okay, कौन है ऑप्शन सी essay type. Okay, essay type हो पिला माने. Which the following is an example of formative assessment? Okay, कौन है वो पिला माने. Which of the following is an for example of formative assessment? Probing questions in the classroom and the examination after the end of the course, final submission of the project report,
examination for promotion to the next grade. The option A होला probing questions in the classroom right answer रहइबो. Probing questions in the classroom is right answer रहइबो. Okay, there you go. अच्छा. The which of the following is audio visual aid for use by teacher? Okay. देखो कौन है तो audio visual aid for use by teacher. कौन है model, television, tape recorder, projector. अच्छा एटा तुमको समस्त आंसर दाव पड़ो कारण एटा मु आंसर देबी एटा तो इजी रहइबो एती तो समस्त को कमेंट बॉक्स लिखो यार ऑडियो विजुअल एड फॉर यूज बाय टीचर एटा तो समस्त आंसर दो मु एटा स्किप करछि ओके तो ना देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर्स जाको वास्ते कमेंट बॉक्स लिखो यार अच्छा भल लागुछि ना क्लास टी समस्त कमेंट लिखो if it is very good then say yes if it is not very good then sir no लिखो ओके जाको भल लागुछि को यार हला ना हमें आपण मानकर फीडबैक टाइम बोली अपेक्षा करी रहिछि ओके which of the following teaching method ensures active participation of learners okay lecture method self study method discussion method online presentation देखो डिस्कशन मेथड ऑफ राइट आंसर है कौन है डिस्कशन मेथड ऑफ राइट आंसर ओके नेक्स्ट the basic purpose of diagnostic assessment is to okay the basic purpose of diagnostic assessment is to know the learner's ability to learn understanding learner's strengths and weaknesses decide the strategy of teaching motivate learners for active learning ऑप्शन बी रही पे राइट आंसर कौन अंडरस्टैंड लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस रही राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा लास्ट क्वेश्चन ओके लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज शुड बी प्रिफर्ड बाय द टीचर फॉर ensuring effective learning about birds and their life okay display models of birds displaying sketches of birds or organizing trip to zoo and using pictures of bird okay देखिबा कौन होई पारे कौन भलो प्रिपेयर होई पारे एंश्योरिंग इफ यू लर्निंग अबाउट बर्ड्स एंड द लाइफ जदि को टीचर पक्षी ताको लाइफ विषय कहया चाहियो देन को मेथड टा सब इजी रहबा भलो रहबो देखो राइट आंसर रहबो ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू जू ओके समस्त को जू नै कि देखाइबो हला ओके थैंक यू एवरीबॉडी आज रो क्लास टी केमिति लागला समस्त टिके भलो लागला कि न लागला कमेंट बॉक्स रे लिखो है ना if it is very good then say yes sir बहुत बढ़िया लागला नहले जदि नाइ सर आउट भलो भाबरे आनंतु अथवा कोनसी रिफाइन दरकार देन सेटा भी कमेंट करी को ऑनेस्टली ओके आउ प्लीज थैंक यू समस्त देखि दियो जति जन वीडियो देखि चंदी ओके प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू ऑल